Hello, friends. Good morning. Welcome to Commodity Market Playbook discussion with SD. This is similar to Commodity Market, just my name change kar raha hu, analysis, because he actually a playbook because it's more like not actually commodity analysis because it's more of what I'm thinking of planning to do. मतलब मेरा plan regarding क्या है, क्या action लेना है commodities. A commodity analysis would have been more elaborative, probably looking at the fundamental sentiment, establishing एक theory establish करने की कोशिश करना, तो ये सब. बट व्हाट रेदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इट्स मोर ऑफ अ प्ले बुक कि व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू और व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट द मार्केट. सो इट्स बेसिकली माय प्ले बुक, व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू. और जो भी प्लान मैं प्लान करता हूँ फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप से. दिस इज माय ट्रेडिंग सेटअप, इसके जरिए ही मैं पूरा ट्रेड करता हूँ एंड आई फोकस ऑन दिस वन. सो दिस इज द इंटरेस्ट रेट्स, 10 साल का इंटरेस्ट रेट्स, मार्जिनल करेक्शन यू कैन सी फ्रॉम द मोमेंटम का जो फेडिंग चल रहा है. ना ये इंटरेस्ट रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ क्योंकि ये फ्यूल कर रहा है यूएस डॉलर इंडेक्स को. एंड डॉलर इंडेक्स वंस अगेन जैसे इंटरेस्ट रेट करेक्ट किया, डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लिटिल स्लाइट करेक्शन, flat correction mostly. So dollar is broadly strong, very strong. And dollar strong, not so good news for commodities, which I'll come to later on. But let me look at the calendar. What's the economic calendar is speaking? कौन सा data है coming up? So calendar को आने देते हैं, let it load. So हम लोग उस टाइम तक एक बार once again dollar index is up. करेंसी को एक बार देखते हैं, यूरो यूएसडी देखिए डाउन. सो मेरा कंटिन्यूअस फोकस रहेगा हाउ दिस डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ और यूरो वीकनेस इज प्लेइंग आउट. इट्स बियरिश फॉर द यूरो एंड बुलिश फॉर द डॉलर. सो ये ट्रेंड में क्या हो रहा है, दैट आई श्योरली वांट टू नो. लेट्स गो टू द इकोनॉमिक कैलेंडर. पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है, देयर वेबसाइट इज बेटर नाउ. सो इम्पैक्ट आई वांट द 3 स्टार लेवल डेटा को एक बार देखना चाहेंगे. सो इम्पोर्टेंट डेटा इज ट्यूसडे. That is RBA minutes. Nothing much important. Is main is Wednesday UK का inflation data. This one is important. So ये वीक उतना strongly important data है नहीं जो it can move the market. कुछ important है like FOMC federal जो मीटिंग हुआ था वो minutes of meeting निकलेगा, that will influence, but nothing trend changing. The main interesting data that I'll be looking to is the manufacturing PMI from China on around 30th of November. So some few inflation rate, core PCE price index, a little bit of inflation headwinds, how it's going. So inflation data के ऊपर मेरा नजर रहेगा. But overall कोई ground changing data तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है. एंड फर्दर अगर कोई न्यूज फ्लो होता रहेगा फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट विल बी इंटरेस्टिंग. बट ओवरऑल डेटा, प्लान डेटा, इवेंट वाइज आई डोंट सी सुपर सिग्निफिकेंट एनीथिंग. सो टेक्निकल्स विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल अगर फंडामेंटल का उतना स्ट्रेंथ है नहीं फॉर द वीक. फाउंटेन ऑफ गोल्ड के जरिए आई एम गोइंग टू टेक अ लुक एट द कमोडिटी मार्केट. क्या है मेरा प्लेबुक? लार्जली बेस मेटल्स में कुछ खास कुछ है नहीं प्लेबुक में. इट्स बेसिकली अ करेक्शन और छोटा टाइम फ्रेम में वेयर वी कैन प्ले द स्विंग. स्विंग जहां पे खेल सकते हैं. मोमेंटम दिख रहा है ऑन द अपसाइड. वी हैव अ फुल ग्रीन कैंडल बट बैकग्राउंड रेड, सो इट्स मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन दिख रहा है. 64% प्रोबेबिलिटी कंसोलिडेशन का. So more rangish market I'm expecting in the near term in copper, or unless we see a strong sustain कर रहा है below 787, I don't think market is turning bearish. And to bullish turn करने के लिए it has to move above 805 and ऊपर से भी strong resistance आ रहा है 810 and 817. ये flat area और ये empty line 810. एंड जिंक को एक बार देखेंगे. जिंक, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम में एक इंटरेस्टिंग है बट नॉट राइट नाउ.
Zinc is after sell off trying to make a comeback. I'm not much of an interested in zinc. I highlighted कि we targeted this flat area और वहीं पे zinc it dropped and now reversed a bit. So ये मिक्स मार्केट में डेली चार्ट में 57% चांस कि कंसोलिडेट होगा, 125 मिनट में भी वही ग्रीन कैंडल, बैकग्राउंड येलो, मिनिमम स्टॉप, ये व्हाइट क्रॉस आउटसाइड कैंडल बॉडी. सो ओवरऑल जिंक नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ बाइंग, but maybe in future it can become. The interesting is aluminium because steadily I can see it is testing this level. ये जो माउंटेन टॉप का रेजिस्टेंस है, जो ब्लू लाइन आई हैव ड्रॉन इट, it cannot is not able to sustain above this blue line level कि 248.9 250 it is coming back and it's difficult to point out कि कब तक ये consolidation चलता रहेगा. It is clear कि further एक bullishness definitely आ सकता है which will be very good, very bullish, but still a range. So as long as it is range, we can't exactly predict that when it's going to go break. So I think we'll have to wait a little more longer. This buy signal, aluminium, will it break this level? I'm not still full confident. So unless I'm confident, I'll not be firing the trades. But once again, किसी का सुन के ट्रेड करना अच्छा बात नहीं होता. It's not good. You should make up your own mind before on the trading side. Gold is interesting. It has already in the morning, it has moved 1%, which is significant because that's why ये timely booking is important था. 125 मिनट में हम लोग देखे गोल्ड का एग्जिट आ चुका था, जो ये फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेट आप फॉलो कर रहे हैं. इनफैक्ट एक बाई सिग्नल भी दिस केम आउटसाइड आवर फ्रेम, आउटसाइड आवर टाइम फ्रेम. सो गोल्ड वाज अ गुड बाय to start with above this empty line level as it closed. So around 2595 जो almost वहीं पे gold sustain कर रहा है. I have not taken any position yet. If this is the reversal, we will get a lot of chance to play it. It is at the morning. The first my candle closes in my time frame will be 10:45. सो 10:45 से पहले कोई कैंडल क्लोज नहीं होगा इन आवर टाइम फ्रेम. मींस 9 बजे मार्केट चालू होता है. दिस कैंडल कॉमेक्स का क्लोजेस एट 10:45 एंड इट्स मंडे. मैं एक हैबिट बनाता हूं कि यूजुअली मैं 11 11:30 एंड प्रेफरेबली 12:30 से पहले मैं ट्रेड नहीं करूंगा इन द गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर कमोडिटी स्पेस. लार्जली आई लुक एट व्हाट मार्केट इज हिंटिंग. This is definitely a strong comeback in gold, not seen since almost 7th of November. Not seen since almost 7th of November. Um, this is, I don't think, मतलब this can go और भी ऊपर जा सकता है. एक अपसाइड लेग और आ सकता है यहाँ पे. So I like to यहाँ पे मैं अलर्ट रखा हूँ जहाँ पे where I'll start with the test position. I want gold to cross $2,600 and then we'll see maybe further strength will come, but lot of resistance है यहाँ पे. ये जो flat areas है, ये flat area they are going to act as resistance. 2612, we are 2627. So recovery बहुत smooth नहीं होगा. सो एज पर माई प्लान मैं फैक्टर एक्स मेथड को इस्तेमाल करूंगा मेरा पोजीशनिंग के लिए. दैट आई यूज ऑन मार्केट का रीडिंग, मार्केट डायरेक्शन बेस्ड है. सो 125 मिनट में दिस इज माय प्लेबुक इन गोल्ड. गोल्ड में मैं बुलिश का हो सकता है ढूंढू, बट आई वांट एटलीस्ट कैंडल क्लोजिंग में थोड़ा 11:30 12 के आसपास जाए, देन आई थिंक. ये रहा सिल्वर. सिल्वर का एक कंसोलिडेशन के बाद सिमिलर गोल्ड जैसा, लेट मी हाइड दिस, गोल्ड जैसा एक ब्रेकआउट आ रहा है. लेट मी, दिस इज, बट ये कुछ खास नहीं, डाउ स्ट्रक्चर नहीं है. सो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इसको प्ले करने वाला हूं. दैट इट इज जस्ट वन साइडेड मूव एंड दैट्स वन मंडे.
So if it has good reversal chance, we'll have lot of opportunities to get into this trade. There are lot of resistance है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है 30.86, एकदम रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट है 30.70, ये फ्लैट एरियाज। सो ये बहुत काफी टाइम एक रेंज में बिता सकता है सिल्वर। एंड सिल्वर और गोल्ड के बीच में इवन फॉर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मेरा प्रेफरेंस रहता है गोल्ड के ऊपर। दिस इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इज रियली इंटरेस्टिंग। क्रूड ऑयल में बढ़िया गेम बन सकता है बिकॉज इट्स अ वीकली ब्रेकडाउन हो सकता है फर्दर। एक फुल रेड कैंडल आया है वीकली में, दो देर आर रेस्ट्रिक्शन लाइक व्हाइट क्रॉस आउटसाइड और वीक जस्ट चालू हो रहा है। सो हियर जो मुझे दिख रहा है कि डेली चार्ट में भी एक बियरिशनेस, बट देर आर लॉट ऑफ की सपोर्ट यहाँ पे $65, वी हैव $67 स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये सब काफी सारे बॉटम्स है यहाँ पे। ये रहा एक बॉटम, सो वी कैन ड्रॉ सेवरल लेवल्स। तो और ऊपर भी लेवल है, सो देख के जितना लग रहा है दो द बियरिश प्रेशर ज्यादा है क्रूड ऑयल, क्रूड कैन स्पेंड रियली सम टाइम फॉर मोर फॉर कंसोलिडेशन। देखिए लास्ट रेंज का जो ब्रेकडाउन हुआ वो फुल्ली स्ट्रॉन्ग मूव नहीं, फिर से करेक्शन हो रहा है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश। So crude oil for quite a long time can remain actually in a range, मतलब can show less volatility, and that is actually positive news. If crude is less volatile, crude remains in a very tight range for now, that is actually good news because हमेशा जो ग्लोबल मार्केट में एक डाउन टर्न आया है या इवन स्टॉक मार्केट, थ्री मेजर फैक्टर हैज बीन वेरी बियरिश: स्ट्रॉन्ग डॉलर, higher interest rates, and higher crude oil price. So currently we have strong dollar, we have higher interest rate, only the crude oil price is not high. So that's actually positive. So I think crude not able to push upward and more bearish is actually overall positive for the economy. Natural gas, interesting, can trade come? Now it has jumped in the morning. I'll not be jumping into any trade, though I have a buy signal, because the exact point of entry, even if I wanted to, the point of entry is gone. So point of entry would have been above this point, around 2.85. And actually, I'm looking in this one more in the daily chart. I'm interested in the upside. I'm very, very interested in the upside because this will be have potential। और मैं थोड़ा यूरोपियन चार्ट्स को भी देख रहा था, एंड यूरोपियन चार्ट्स आर शोइंग सम प्रॉमिस कि possibly bulls are coming back after quite some time। Possibly bulls are coming back in both Europe, and if Europe comes, it will be gradually reflected in, इसमें भी रिफ्लेक्ट करने वाला है जो न्यूयॉर्क NYMEX natural gas, and definitely then it will likely to reflect in M6 natural gas. So ये जो natural gas का comeback दिखा रहा है कि once again a green candle, I'm interested in this, but I want this buy signal के आसपास जो high रहता है, this is the high point, I want a cross। ये जो हाई पॉइंट का है, ये हाई पॉइंट का क्रॉस होने पर देन ओनली आई विल बी इंटरेस्टेड इन द डेली चार्ट। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है, ये मुझे प्रॉम्प्ट करेगा टू ट्राई एनीथिंग विथ अ स्मॉलर क्वांटिटी, because this, if this is the correct reversal I called it, it could be a very, very long reversal। You can see the longer term charts is very bearish, so we'll be picking cherry very early, but without more confidence I'm not getting to do anything in natural gas right now। I'm planning more on gold silver। I'm closely watching ये जो comeback हो रहा है gold silver, तो एकदम में ऊपर नहीं जाएगा and significant bearish pressure है definitely in the daily chart। so immediately कोई ऊपर नहीं जा रहा है, even gold lot of strong resistance है।
2656 है यहाँ पे, then we have 2624, and ये slanting zone से gold can actually drop lower and come down towards जो लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2441 2460, इस एरिया में एक्चुअली गोल्ड कैन कम अप, but I don't play on what I think. I will look at the market, like currently it's showing bullishness. So I have a rule of participating the downside, the way I'll participate, the quantity. And so this participation, कितना quantity मैं कर रहा हूँ, that is also important for me. और ऐसे मेरा सुन के किसी को जंप नहीं करना चाहिए ट्रेड में. दिस इज माय प्लेबुक, दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, व्हाट आई एम थिंकिंग लार्जली. सो कुछ खास ट्रेड अगर समराइज करूं तो कुछ खास ट्रेड मुझे नहीं मिल रहा है जो मैं जंपिंग लाइक. मंडे आई वांट टू वॉच मोर. Gold silver is looking interesting, but I don't think I'll be playing them with large position. My capacity का 1/4 1/5. Probably I'll try with first and then see ये जो recovery how strong it is, because upside resistance I think, plus I think मेरा thinking भी, because more it can happen on the downside. People are stuck. लोग गोल्ड का जो अचानक शार्प रिवर्सल हुआ, जो लोग लास्ट में बाई किए थे, दे आर स्टक, दे आर मेंटली स्टक, उनका पैसा स्टक हो चुका है. So the moment it comes back, people will be clearing out some of the positions. So I don't think immediately super bullish. And similarly, जो लोग buying करना चाहेंगे, मिस हो गया था रैली, they are looking to buy. So it's both sided. I think इक्विटी है, इक्विटी मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंस हो सकता है दोनों साइड, बोथ साइड कैन वर्क, but we don't have any good level, have conviction to go big. I don't have it. Then silver also, silver is whatever we play, I'll play with a small. I'm not confident with current chart structure that even though we have a buy signal, it's good to go. Crude oil, it looks more bearish, lovely, because the break can happen solid, and is showing bearishness. But once again, several warning कि min stop और 125 मिनट में candle is not sell, so it's still not a sell signal yet. And natural gas can become interesting more towards the buying side, but looking at the chart structure, जो resistance है, it doesn't look like कि मैं बहुत सारा quantity से play करने वाला हूँ. इनफैक्ट अभी natural gas में currently कोई play है ही नहीं. I'll wait a bit more. So ये सब जो confirmation मिलेगा, then only I'll go for higher quantity. तो लग रहा है देख के this will be in terms of trading in the commodities मेरे लिए थोड़ा relaxing week होने वाला है. अभी तो कोई पोजीशन जाएगा ही नहीं. आई वांट when as the week progress हम लोग देखेंगे कि मैं देखूंगा क्या होने वाला है मार्केट में, and then I'll probably participate. So it's going to looks like interesting कि थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मौका मिलेगा, एंड साथ में जो बाकी का जो पोजीशन है उसमें या बाकी मार्केट में ध्यान देने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, जैसे आई हैव गॉन शॉर्ट इन ट्रेजरी बॉन्ड्स इन द लॉन्ग टर्म. सो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दूसरे मार्केट में अगर बन रहा है तो उसके ऊपर जरूर नजर डालने का मौका मिलेगा. सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा है, ऑल द डोंट पुट अ फॉरगेट टू पुट अ थम्स अप. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड एज ऑलवेज हैप्पी ट्रेडिंग.